Sorry for the disturbance. Now see, PQ is parallel to WO and P is the midpoint. See, अभी ये मैंने PQ is parallel to AC लिखा, PQ is parallel to AC, उसके बाद लिखा PX is parallel to WO because these are the point in the parallel sides. So P is the midpoint is given. This is given. इस कंडीशन पे मैंने पूछा X is also a midpoint. तो इसका रीजन है this is converse of midpoint. Midpoint theorem. This is the converse of midpoint theorem. It means that E is the midpoint. तो अब हमें पता चल गया कि if E is the midpoint and P is the midpoint, तो ये which is the half. Px is equal to half of AO. तो Px is equal to OW. So therefore, PXOW is a parallelogram. We know that angle XOW is equal to 90 degree. Therefore, angle XOW is equal to XPW. Angle XPW, which is equal to 90, opposite angle of a parallelogram. Opposite angle of a parallelogram. So it means that if this is 90 degree, hence PQRS is a rectangle. Is there any doubt now? अभी किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछे मुझसे. Now it is clear. Now it is clear. Why do we have to go so long to understand the question well? Another way, क्या another way है मुझे बताओ. I want to know. RW, RW, where is RW? हाँ, it's okay. RW मतलब ये RY और RZ. See the figure first. Okay, RY. RY is equal to, RY is half of DO. DO. And half of DO. How do you say that कि if तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि R is the midpoint, Y is the midpoint? If the R is the midpoint, then how do you say that कि Y is the midpoint? कह सकते हो? Where? बताओ ना मुझे कहाँ पर है. I want to see. We know that कि Q is the midpoint, R is the midpoint. तो उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये Y भी midpoint है. Now you are taking the triangle, COD. Yes, है ना? जब तुम COD triangle ले रहे हो तो Q का काम खत्म हो गया. Now the R is there. R is the midpoint. Then how do you say that कि Y is the midpoint? How do you say the R is the midpoint of PQ? Sorry, Y is the midpoint of PQ. Sorry, RQ. उसको कहना पड़ेगा ना कुछ. Y को midpoint बनाने के लिए हमें converse of midpoint theorem use करना पड़ेगा. Is that clear, ब्रज? ठीक है ना. यही इसीलिए मैंने इसको लॉन्ग लिया है कि यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द मिडपॉइंट थ्योरम एंड हाउ टू यूज द कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. क्लियर? वी नो दैट R is the midpoint. We say that कि R is the midpoint and RY is parallel to this. Means R is the midpoint. It's okay. And this is the given portion. And RY is parallel to DO. But
How do you say that कि y is the midpoint? This is the converse. Yes, therefore y is the midpoint by the converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. Is that clear? ब्रज, यही डाउट्स है, इसी को डाउट्स बोलते हैं. किसी ने तुम्हें बोला कि y इज द मिड पॉइंट है, तुमने मान लिया. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि क्यों है, कैसे है. भाई मुझे पता है कि Q मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, तो ये बीच वाला मिड पॉइंट कैसे हो सकता है, जबकि हमने सिर्फ इसे प्रूव किया है कि दिस इज ये तो हमारा, हमने क्या इसके अंदर ये प्रूव किया है क्या, ओ जेड इज इक्वल टू ओ एक्स या ओ वाई इज इक्वल, सॉरी ये आर वाई इज इक्वल टू वाई क्यू और एस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू, तो हमने प्रूव नहीं किया ना कहीं भी. So this is how I take a long method. मैं भी बोल सकता था कि y is a midpoint, as r is a midpoint, this is parallel. तो इसीलिए लिया मैंने ये चीज कि px is parallel to this and p is the midpoint is given midpoint, then x is a midpoint by the converse of midpoint theorem. And you have to write, if you don't write this converse of midpoint theorem, then how do you say that x, y, z, w are the midpoints? और जब तक हम ये, अब बोलो. फैक्ट वो तो बहुत है, वो फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे. फैक्टर्स तो मेरे पास इसमें अनलिमिटेड फैक्टर्स में क्रिएट कर सकता हूँ. बट दिस इज अ मिड पॉइंट थ्योरम, देन यू हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट ओनली. ये मिड पॉइंट थ्योरम है, तो वी हैव टू यूज द मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. फैक्टर इसको क्रिएट करना तो बहुत इजी है, इसको प्रूव करना बहुत इजी है. अभी हम यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करके इन दोनों को पैरेलल कर देंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे परपेंड कर देंगे हम इसको इसको हम दो कॉन्करेंट बना के फिर हम इसे लिख सकते हैं. दिस इज, अगर सपोज हम इसे यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन कर दें, वी नो दैट दिस जो भी है, तो उसके बाद हम इसे कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं इसमें हमारे पास करने के लिए, वो छोड़ दो. बट this question is based on midpoint theorem and the converse of midpoint theorem, then you have to do with midpoint theorem. और कोई दूसरा तरीका midpoint theorem में नहीं है जो इसको ये y को midpoint बना दे. ओके, नाउ इट इज क्लियर. ठीक है ना, क्योंकि इफ वी आर, अभी तो हम यहाँ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लिया. और अगर हम दूसरा कुछ, इफ वी आर स्टडिंग डिफरेंट थिंग, तो फिर डिफरेंटली इसको हैंडल करेंगे. सो आई थिंक नाउ द टाइम इज ओवर. Yes, now time is over. You can join your class. Or today, because of a call, there is two video. So I will put these two parts in today's video. So if there is a problem with exercise 8.2, you can see there also in WhatsApp. Okay. Bye bye. Take care. Go join the next class. We will continue. Tomorrow I will continue from question number 3.